ओके लेट्स स्टार्ट विद द माइनर वीडियो ऑन रिवीजन ऑन स्प्रिंग बूट। तो इसमें मैं बेसिक एप्लीकेशन बना रहा हूँ एंड व्हाट ऑल थिंग्स दैट आई एनकाउंटर्ड डूइंग दिस। सो जावा आई सेलेक्टेड एज लैंग्वेज, मेवन आई सेलेक्टेड 4.1.0 एंड देन इंटरव्यू प्रैक्टिस एंड ऑल, ये तो आपको जो चाहिए वो कर दो। एंड देन जार प्रॉपर्टीज एंड देन बेसिकली आई हैव सेलेक्टेड दिस पर्टिकुलर 17 version because the other versions did not work for me for some reason. And then I added the dependencies of Lombok, then Spring Web, then HTTP client. Okay, इतना मैंने ऐड कर दिया। उसके बाद मैं डाउनलोड द प्रोजेक्ट, एक्सट्रैक्टेड द प्रोजेक्ट, आई शो यू राइट हियर। तो वंस आई हैव एक्सट्रैक्टेड राइट, या दिस इज़ राइट हियर, and then all I did is I opened it in IntelliJ right here like that. And just forget about everything. Let's first concentrate on what the basics are, like the hello world thing I've created, like hello world controller. Basically controller mein this is like a REST controller, ठीक है। And then we have this request mapping. Okay, request mapping mein we can basically add like whatever the hello, and then every time jo bhi apan like the abhi get mapping mein directly we cannot write slash after the port. We'll have to write hello and then slash because this is appended in our URL now. तो ये request mapping में this is not in request controller, REST controller, ठीक है, ये याद रखना, request mapping अलग है। And then for every controller we'll have to have the required args constructor. This is because अगर ये I'll show you because in the service class we have this error, right? अब इस error को अपने को दूर करना है, तो what we have to do is public hello world controller, then we'll have to have the constructor made, okay, like that. And here we'll need to pass in the hello world space hello world h small, and then this dot hello world equal to hello world. Okay, and let me see what there is. Oh, I'm so sorry, it should be hello world service. Yeah, we will have to replace this name to hello world service. Okay, अब आप अगर आप रन करोगे it is going to work absolutely fine. तो let's try that. Okay, चल तो गया है। Now let's do the local host 9090, hit enter, hello world, that works. तो ये याद रखो, ये कंस्ट्रक्टर हमने मैन्युअली बनाया, बट अगर आपको ये नहीं बनाना है तो डायरेक्टली यूज़ दिस पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। once this is cleared, now okay, get mapping में हमने स्लैश किया है, and then we are returning a string, therefore hello world constructor and return from the service class, ठीक है। अब service class के अंदर अपन जाके देखते हैं क्या क्या किया हमने, ठीक है। let's go to the service class. yeah, so we have created an interface में hello world service नाम का हमने किया है, and the same method we have in here. and इसका implementation अगर देखना है तो interface को अपन क्या करते हैं, usually implement करते हैं, ठीक है। तो implements hello world service is from here, ठीक है। and then we don't need a required args constructor here, we just need the service class over here. okay, just to know that it's a bean, and override करते हैं हम लोग इस particular method को, and then we return the string hello world. okay, इतना we have done, ठीक है। बेसिकली बहुत सिंपल है ये, ठीक है। अब ये अच्छे से पढ़ लो, एंड देन वन मोर थिंग, वाइल स्टार्टिंग द प्रोजेक्ट, इन द प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर आई हैड टू गो इन हियर एंड सेलेक्ट इट मैन्युअली फ्रॉम हियर, बिकॉज अगर मैं यहाँ से सिलेक्ट करता था एडिट कॉन्फ़िगरेशंस में तो इट वाज नॉट वर्किंग फॉर सम रीज़न, लाइक आई सेलेक्टेड इट फ्रॉम देयर एंड देन इट स्टार्टेड वर्किंग, एंड देन you'll have to go and clean and rerun, download all the packages, refresh, तो ये सब करते बैठो and it will eventually work. this was for Lombok as well, तो Lombok भी काम नहीं कर रहा था, but then we have got this pop-up over here which is enable annotation processing, which we have to say yes, and only then our IDE will be able to identify the Lombok and these helper things for extensions kind of thing, right? okay, get etc. अब अपन आते हैं एक रियल वर्ल्ड, मतलब जो इंटरव्यू में पूछ सकते हैं ऐसे चीज़ पे। हेलो वर्ल्ड को अभी अपन ने बंद कर दिया है। अब लेट्स सी, वी हैव टू क्रिएट लेट्स से एन एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो बेसिकली क्या दिखाना है एम्प्लॉय इंटरव्यूअर को, CRUD ऑपरेशंस। तो let's see what we can do, right? so first we have the employee entity, and employee entity में basically क्या है,
वी हैव क्रिएटेड दिस पब्लिक क्लास, ठीक है, एम्प्लॉय, जिसमें प्राइवेट आईडी, नेम एंड एज हमने दिया है। अब इसमें हमने गेटर सेटर लगा दिया है एंड वी हैव अ सेपरेट कंस्ट्रक्टर विच असाइंस दिस पर्टिकुलर लोकल वेरिएबल्स विद द वेरिएबल्स वी हैव इन द पैरामीटर्स। वी कैन obviously we can skip this part and we can add all args constructor and that would be absolutely fine। okay, तो ये हो गया एंड देन वी हैव दिस DTO। तो हम लोग पूरा डेटा तो हम लोग रिटर्न नहीं करते यूजुअली, वी हैव सम एन एब्स्ट्रैक्शन एंड फॉर एब्स्ट्रैक्शन वी आर नॉट गोइंग टू गिव द ID to the in the response। तो basically for that we have created the DTO which has name and age only and then getter setter for this। अब आते हैं अपन कंट्रोलर पे। कंट्रोल ऑल्ट एंड ओ अगर आप दबाते हो तो वी रिमूव ऑल दी अनवांटेड इंपोर्ट्स, ठीक है। तो अब for this particular controller, employee controller, we have REST controller as we definitely have to have। then we have a request mapping called as employee because हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे ब्लैंक छोड़ रहे हैं एंड दो चीज़ें ब्लैंक नहीं जा सकते एट ए टाइम, क्योंकि हमारा हेलो वर्ल्ड भी है जो ब्लैंक ही है, ठीक है। तो हम लोग इसको ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, तो इसलिए वी हैव एडेड एम्प्लॉय। सो अब हम लोग जब भी इसको ट्रिगर करना चाहते हैं तो एम्प्लॉय स्लैश करके ही करना पड़ेगा। ओके, दैट इज़ अबाउट दैट एंड देन सिमिलरली वी हैव क्रिएटेड द फाइनल सर्विस क्लास, ठीक है। तो सर्विस क्लास में हाँ, सबसे पहले अपन जाते हैं गेट के लिए। अब गेट क्या होता है, गेट मैपिंग में हम लोग वी हैव लेफ्ट इट ब्लैंक। सो बेसिकली अगर आप लोग ऐसे जाओगे, राइट, ऐसे जाओगे तो इट इज़ गोइंग टू लोड वट एवर इज़ देयर इन हियर। बट एक चीज़ है, अगर आप यहाँ पे स्लैश करोगे ना तो ये काम नहीं करता है फॉर सम रीज़न, आई डोंट नो, आई माइट हैव टू एक्चुअली चेक दैट, बट या दिस इज़ वन थिंग टू नोट जस्ट इन केस इन इंटरव्यू यू माइट get this error, ठीक है। तो या this is this now we will be returning a list of employee DTO, as I said, we will not be returning the actual entity class and therefore we will go to the service class as we have in here। and अगर अपन जाते हैं इसका implementation पे, right, तो what we'll have is basically all employees dot stream करते हैं, stream dot map and map में हम लोग क्या करते हैं, value, and value को हम लोग ऐसे arrow करके इसमें लाते हैं and basically we are having the new employee thing, ठीक है। हम लोग एक एम्प्लॉई नाम का एक नया ये क्रिएट कर रहे हैं, वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं एंड देन वी आर सेटिंग द नेम एंड द एज इन हियर एंड देन वी आर रिटर्निंग दिस पर्टिकुलर एम्प्लॉय DTO। अब ये हर एक वैल्यू के लिए क्या करेगा, मैप करेगा, मतलब क्या करेगा, हर एक वैल्यू के लिए जाएगा, इट इज़ गोइंग टू गो अहेड एंड इट्स गोइंग टू गेट द एम्प्लॉय DTO। तो ईच एम्प्लॉय DTO वो लाएगा एंड इट्स गोइंग टू रिटर्न टू दिस पर्टिकुलर थिंग एंड एम्प्लॉय DTO नाम का लिस्ट जो है वो रिटर्न हो जाएगा। अगर आपको इसको ईजी करना है तो वी कैन स्किप दीज बोथ लाइन्स एंड बेसिकली अपने को बस एम्प्लॉय DTO में जाके वी विल हैव टू हैव ऑल आर्ग्स कंस्ट्रक्टर एंड इन हियर वी विल हैव टू हैव द val डॉट गेट नेम कॉमा val डॉट गेट एज, दैट्स इट। तो अब अपन इसको एम्प्लॉय DTO को रिटर्न कर सकते हैं। इफ़ नॉट वी कैन डायरेक्टली copy this, do this and we can do this and we'll just have to have a new keyword in here। yeah, there we go। अब ये काम कर जाएगा। all right, तो that is that about it and या सो दिस इज़ फॉर द गेट रिक्वेस्ट। तो ये हमने क्या किया है, एक लिस्ट बनाई है, ठीक है, क्योंकि हम लोग DB यूज़ नहीं कर रहे तो हम लोग लोकली क्या करते हैं, सर्विस क्लास में हमने एक लिस्ट बनाई है एम्प्लॉई नाम का, जिसमें सारे एम्प्लॉयज़ को हमने रखा है, सॉरी, एंड वी हैव क्रिएटेड अ न्यू अरे लिस्ट आउट ऑफ दिस। ऑल राइट, अब हमने इसी लिस्ट को क्या किया है, स्ट्रीम करके रिस्पॉन्ड में हमने नॉर्मल एम्प्लॉय नहीं दिया है, एम्प्लॉय का DTO दिया है जान के, ठीक है, बिकॉज दिस डज नॉट हैव द ID फील्ड विच वी डोंट वांट टू शो टू द नॉर्मल यूजर्स। ओके, तो ये याद रखना। एंड लेट्स कम बैक टू दी ऐड। तो ऐड में अपन क्या क्या करते हैं, ऐड में ऐड एम्प्लॉय है, ऐड एम्प्लॉय में सो सॉरी या सो one second, yeah, so add employee में basically what we do is we have request parameters, ठीक है। request parameter में हमने name दिया है और एक age दिया है। तो अब हम लोग सर्विस में add employee और ये दोनों पास कर रहे हैं, तो ये तो देखने की ज़रूरत नहीं because we are just going to return the success message, therefore we have a string over here। अब हम लोग implementation पे आते हैं। implementation में हमने क्या किया है, override किया है, obviously we have to override, don't forget about this। now public string employee service and we have got all the both of the details from the controller and now what we'll
डू इज़ वी विल जस्ट ऐड दी नेम एंड एज, ठीक है, न्यू एम्प्लॉय करके हम लोग इसी लिस्ट में हम लोग अपेंड करेंगे। अपेंड करने के लिए ऐड यूज़ करते हैं अपन यहाँ पे, ठीक है। तो न्यू एम्प्लॉय करके हम लोग ने ऐड कर दिया। बट यहाँ पे आईडी के लिए क्या करना पड़ेगा, आईडी के लिए दिस, सो सॉरी, ऑलराइट, सो आईडी के लिए ना वी विल हैव टू यूज़ दिस प्राइवेट फाइनल एटॉमिक इंटीजर रैंडम। तो ये तो मैंने नाम दिया है रैंडम नंबर जनरेटर करके। तो ये सिंटैक्स याद रखो, एटॉमिक इंटीजर, ठीक है, एंड न्यू एटॉमिक इंटीजर, एंड वो यहाँ पे 1 वैल्यू आनी चाहिए इसके इनपुट्स में, ठीक है। एंड विद दैट बीइंग सेड, आईडी को हम लोग क्या करते हैं, गेट एन इंक्रीमेंट, मतलब इनिशियली इट विल स्टार्ट विथ प्रॉबली, लेट मी जस्ट रिफ्रेश, okay, so it's an empty list right now. If we just do this and we refresh this, we have 1 value, and yeah, it starts from 1 actually, ठीक है। तो 1 से स्टार्ट होता है। सो गेट एन इंक्रीमेंट, आईडी 1 आएगा, एंड देन वी विल रिटर्न दिस पर्टिकुलर आईडी, वी विल ऐड दिस पर्टिकुलर आईडी इन दिस पर्टिकुलर लिस्ट। तो ये डीबी में सेव कर सकते हैं, बस हम लोग यहाँ पे एम्यूलेट कर रहे हैं, ठीक है। एंड वी रिटर्न सक्सेस मैसेज, ऑलराइट। तो दिस इज़ व्हाट इट इज़ and this is what we get, and as you can see 1 1 2 1 2 is हर बार हम लोग यहाँ पे प्रिंट करते हैं, ठीक है। That's it for this video.